तो कहीली मुझे ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विषय पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे कही। तो चलतु क्लास को स्टार्ट करवा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी रो फर्स्ट चैप्टर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो तुम सांग मानू सेंड कर दियो जहाँफल से भी किसी चीज शिखे भिडियो। तो चलते क्लास को स्टार्ट करवा। तो द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल यूज द टर्म पॉलिटिक्स फॉर डिफाइनिंग द सब्जेक्ट व्हिच कंसर्न itself with the study of line in the police. The Greek city state was called polis. Aristotle wrote book which describe the nature and function of city-state of his times and gave to it the title politics. Consequently, the term politics came to be popularly used for identify the subject concerned with the study of police. The state was concerned with all public affairs and its purpose was to secure happy, prosperous life and its self-sufficiency for all its people. माने यार अर्थ है राजनीति विज्ञान रे तार माने फादर होचंती अरिस्टोटल आउ पुलिस रे जीवन माने अध्ययन रे सहित जड़ित यहाँ विषय को व्याख्या करने राजनीति शब्द माने व्यवहार कर पुलिस रे राज्य अध्ययन सहित यह विषय राज्य समस्त जनसंपर्क चिंतित थिला एवं यार उद्देश्य थिला जे यार समस्त लोकंक पई सुख समृद्ध जीवन एवं आत्मनिर्भरशीलता एई माने एटा लोकंक पई सुख समृद्ध जीवन और आत्मनिर्भरशीलता प्रोपोजल लाइफ एंड सेल्फ सफिशिएंसी फॉर ऑल इट्स पीपल। मुझे टिके डिस्क्राइब कर दूची बुझे दूची आकु माने एटा टिके बेसी इंपोर्टेंट नहीं आकु मु भल से बुझी। Later on, several philosophers began with several different terms, political philosophy or political thought or political theory, for identify the study of state. The practice was adopted because because they felt that the real question to be discussed were what is the philosophy of state, what the state should be, what should the state do, what should be the relation between the individual and the state. After some time, several other scholars came up with the view that since their major concern was the study of state government, it was essential to designate the subject as political science of the state and government. तो यार मानेला political science. Later on, several philosophers began using several different terms, political philosophy or political thought or political theories for identify the story of state. माने अनेक दार्शनिक राज्य अध्ययन को चिन्हट करने राजनीतिक दर्शन किंबा राजनीतिक चिंताधारा किंबा राजनीतिक तत्व भाव भिन्न 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 शब्द व्यवहार करने आरंभ कले। यह अभ्यास ग्रहण कराइला राजनीतिक तत्वर कारण से माने अनुभव कले जे आलोचना होगाकू प्रकृत प्रश्न गुड़िक है राज्य रे दर्शन कौन राज्य कौन होगा उचित राज्य कौन करवा उचित व्यक्ति एवं राज्य मध्य संपर्क कौन होगा उचित आ किछि समय पर अन्य पंडित मैंने यही मत प्रकाश कले जे सेमानकर मुख्य चिंता राज्य एवं सरकार अध्ययन होइतबारु यह विषय को राजनीति विज्ञान भाव में नामित करवा जरूरी अटे। माने राज्य एवं सरकार का अध्ययन होइतबारु यह विषय को राजनीति विज्ञान भाव में नामित करवा उचित राज्य एवं सरकार का विज्ञान ही माने राजनीति विज्ञान। State political science means कौन? Political science is day-to-day activity in state and government. Political science जे empirical study माने scientific method
तो नेक्स्ट पॉइंट, towards the end of the 19th century, the name political science got a near universal acceptance. This name was used to identify the subject concerned with the study of state. In the first half of the 20th century, a very popular definition of the subject came to be political science begins and ends with the state garner. Under science, the study of state. When political science, the study of state essentially involved the study of its government. Study of state and government was identified as political science, and it was defined as the science of state and government. It was also considered synonymous with the term political theory. माने 19th सेंचुरी शेष आड़क जो राजनीति विज्ञान नाम एवं सर्वभारतीय स्तर ग्रहण है जे राज्य अध्ययन सहित जड़ित विषय चिन्हट करने को यही नाम व्यवहृत होता। आउ 20th सेंचुरी प्रथमार्धरे विषय एक बहुल परिभाषा है। राजनीतिक विज्ञान राज्य सहित आरंभ हुए और राज्य रे शेष हुए। गार्नर कहते जेहेतु राज्य अध्ययन यार सरकार अध्ययन जड़ित थिला तेणु राज्य तथा सरकार अध्ययन को राजनैतिक विज्ञान भाव में चिन्हट कराइला एवं यह राज्य तथा सरकार विज्ञान भाव में व्याख्या कराइला। या राजनीतिक तथ्य शब्द सहित समकक्ष भाव में विवेचना कराइला। तो यहाँ बेसी माने बुझवा दरकार नहीं। इट वाज कन्सिडर्ड सिनोनिमस विथ द टर्म पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ समकक्ष भाव में विवेचना कराइला, राजनीतिक तथ्य सहित समकक्ष भाव में विवेचना कराइला। तो नेक्स्ट पॉइंट, political as science of state and government traditional view next future माने तार आउट भी वैशिष्ट। political as science of state and government traditional view तो टिके डीपली पढ़ो देखंतु एटा मोबाइल रे एडिट होतवार टिके माने बेसी होने लैपटॉप रे जते बेले एड कर माने एडिट करबी सेते बेले भल से बुझी की आ भल से बुझी भी हेबो। तो देखंतु in its traditional view politics is called political science and defined as the science of state and government माने politics and science of state and government traditional view यार माने मीनिंग है राज्य एवं सरकार का विज्ञान भाव में राजनीतिक तार पारंपरिक दृश्य। ट्रेडिशनल व्यू माने पारंपरिक दृश्य तार मीनिंग है पारंपरिक दृश्य। In its traditional view, politics is called political science and defined as the science of state and government. Political science कारण डिफाइन कर यार पारंपरिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान कहुए। यार जो पारंपरिक दृष्टिकोण रे जो राजनीति को माने राजनीति विज्ञान कहुए। पारंपरिक दृष्टिकोण राजनीति को राजनीति विज्ञान कहुए। यह माने एवं यह को विज्ञान भाव में परिलक्षित मध्य कराई इच एंड डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तापर नेक्स्ट पॉइंट हला एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस प्लेसेस emphasis upon the study of origin, nature, functions and purpose of state, the relation between the individual and state, the organization, organs, form and function of government, the rights and duties of the people, theories of state। यार मन अध्ययन विषय भाव में राजनीतिक विज्ञान राज्यर उत्पत्ति प्रकृति और कार्य और उद्देश्य व्यक्ति और राज्य मध्य संपर्क संगठन अंग सरकार रूप एवं कार्य लोकों अधिकार माने फंडामेंटल राइट्स एवं कर्तव्य उपर गुरुत्व देता है। ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस प्लेसेस एम्फेसिस upon the study of origin, nature, तार प्रकृति फंक्शन पर्पज तार पर्पज ऑफ स्टेट, द रिलेशन तार रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल गोटे व्यक्तिर रिलेशन उपर गुरुत्व देता है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो ऑर्गन्स
from and function of government, the rights and duties of the people, theories of the state। यह माने ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗେଟାଲ has observed political science study the historical investigation of what the state has been an analytical study of what the state is and a political ethical discussion of what is state ought to be। ମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଫେସର ଗେଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା। ତାପରେ defines political science as ସେ define କରୁଛନ୍ତି the science is concerned with the state and which endeavors to understand and comprehend state in its organization in its essential nature image from manifestation in its से व्याख्या कर सकते हैं ब्रिगेड जहाँ राज्य समिति दे रही है केवल यह बोली विधि इस तरह आदेश तय स्थिति निष्ठा विकास the next one called gender rights political science is that part of social studies whose studies of the foundation of the story analysis सामाजिक विज्ञान ଏହା ଏବଂ ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୂଳତଃ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି in the past places are different associations which involve the story of the organization activity of the state ideas and the राज्य କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ प्रिंसिपल यार आइडियाल्स के तापर यार अंडरलाइन इट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन और यार कार्य को मध्य बहुत गुरुत्व दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड ट्रेडिशनल व्यू माने पारंपरिक दृश्य ए डिफाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस माने भारत राजनीति मध्य एक निर्दिष्ट पार्थक्य विषय बुझा राजनीतिर The traditional view makes a clear distinction between politics and political science. Political science is regarded as the science of state and government. The study of state, government, and other political institutions constitute the scope of the discipline of politics. Politics is taken to mean the current problems and issues being faced and handled. Politics रे बहुत current problem issue being faced
बहुत फेस करती हैंडल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैंडल करती इट इज कंसर्न विद द करंट प्रॉब्लम्स एंड इशू फेस बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द पॉलिसी एंड law of the government which are made use daily. This politics includes all activity which are actually undertaken by political groups and organizations working in the state. Party politics falls in the domain of politics and not political science. मैं भलसे टिके ओडिया रे टिके बुझे दूची पारंपरिक दृष्टिकोण रे एटा राजनीति विज्ञान मध्य एक स्पष्ट प्रभेद करे राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार को विज्ञान भाव विवेचना करे राज्य सरकारी एवं अन्य राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िक अध्ययन राजनीति विज्ञान श्रृंखला परिसर अटे वर्तमान समस्या है तथा राज्य सरकार सम्मुखीन होता तथा परिचालना करुवा अर्थ को राजनीति नि सांप्रतिक समस्या एवं सरकार सम्मुखीन होता समस्या गुड़िक सहित सरकार नीति एवं नियम सहित जड़ित राजनीति समस्त कार्यकलाप अंतर्भुक्त जहाँकि राज्यर कार्यरत राजनीतिक गोष्ठी एवं संगठन द्वारा कराए पार्टी राजनीतिर डोमेनेर डोमेन पेट पार्टी एवं एथिरे पार्टी राजनीति डोमेन एंड राजनीतिक विज्ञान नुहे ये कौन कही देखो वर्किंग ऑफ द स्टेट पार्टी पॉलिटिक्स फेल्स इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स एंड नॉट पॉलिटिकल साइंस तबरे एटा को बेसी एक्सप्लेन करवा नहीं डायरेक्ट पॉइंट को जो गार्नर कहते JW गार्नर डिस्क्राइब पॉलिटिक्स एज ए टर्म confined to that of the business and activity which has to do with the actual conduct of the affairs of the state माने गार्नर कहते एक शब्द भाव वर्णना करछन्ति जे व्यवसाय एवं कार्यकलाप सीमित राज्यर प्रकृत आचरण सहित कर पारंपरिक दृष्टिकोण सहित कर तपर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एंड ट्रेडिशनल व्यू माने पारंपरिक दृष्टिकोण सह माने या को एक्सप्लेन करो पलक क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस बाय डिवाइडिंग पॉलिटिक्स इन टू पार्ट थियोरेटिकल पॉलिटिक्स एंड अप्लाई पॉलिटिक्स या दुईटी भागे विभक्त कराई पोलक को थियोरिकल पॉलिटिक्स एंड अप्लाई पॉलिटिक्स दुईटी भाग तापरे थियोरिटिकल पॉलिटिक्स इंक्लूड इन इट्स स्कोप आर द थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट थ्योरी लेजिस्लेशन एंड थ्योरी ऑफ स्टेट एज ए लीगल एंटिटी और एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माने यार जो परिसर अंतर्भुक्त सिद्धांत सार्वभौमत्व तापर सरकार को तत्व आईन एवं आईनगत संस्था भाव किंबा कृत्रिम आईनगत व्यक्ति भाव राज्यर तत्व विषय कहुई थियोरिटिकल पॉलिटिक्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तापर नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई पॉलिटिक्स It includes the existing form of government, the state as it exits the government, constitutional law and usage, parliamentary system, army, navy, police, currency, budget and trade law and legislation, legislative, procedure, court, justice, their machinery, judicial, president and authority and diplomacy, peace and war, treaties, convention, extra. माने यार अर्थ है एथिरे विद्यमान सरकार राज्य जेपरी अच्छी सरकार का संवैधानिक आईन एवं यार व्यवहार संसदीय व्यवस्था तापर सेना पुलिस नेवी मुद्रा अंतर्भुक्त एथिरे बजेट एवं वाणिज्य तापर आईन तापर विधानसभा प्रक्रिया तापर न्यायालय
ଯନ୍ତ୍ର ମେସିନାରୀ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ମିଳନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆପ୍ଲାଏ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ତାପରେ ଅନ୍ ଦ ବେସିକ୍ସ Pollock highlight the distinction between the theory of politics, political science and practice of politics. Politics in politics on the basics Pollock highlight the distinction between the theory of politics, political science and practice of politics. ମାନେ ୟାର ମାନେ ହେଲା ଏହା ଆଧାରରେ ପୋଲକ୍ ରାଜନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ରାଜନୀତିର ଅଭ୍ୟାସ ଯଥା ରାଜନୀତି ଅଟେ। In other words, traditional theorists of politics made a distinction between the discipline studying state and government, political science, and the actual practice, political activity, and current problems and issues being faced by the government. Politics faced by government of politics। अन्य अर्थरे याकु आमे बुझिबा ताले राजनीति पारंपरिक तत्वज्ञ माने अनुशासन मध्य पार्थक्य करथिले। राज्य एवं सरकारी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान एवं राजनीतिक कार्यकलापर प्रकृत अभ्यास एवं सांप्रदायिक समस्या एवं सरकार सम्मुखीन हेतुवा समस्या यथा राजनीति। तापरे एबे तार पॉइंट माने बुझिबा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस भितर हम डिफरेंस बुझिबा। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स इज कंसर्न, एटा को मन रखंतो, एटा बहुत माने एक पॉइंट माने बहुत इंपोर्टेंट। Politics is concerned with the day-to-day actual activity of the government. Political science seeks to study and explain the theory of the fundamental principle, origin, nature, scope, and power of the state and government. माने यार माने है सरकार दिनकिया कार्यकलाप सहित राजनीति रे चिंतित। राजनीति विज्ञान माने मौलिक फंडामेंटल प्रिंसिपल माने मौलिक नीति, तापरे ओरिजिन, तापरे उत्पत्ति प्रकृतिर सिद्धांत अध्ययन और व्याख्या करने को चेष्टा कर। राज्य एवं सरकार को परिसर एवं यार क्षमता माने ओरिजिन माने उत्पत्ति, नेचर तार प्रकृति, स्कोप एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तापर नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स मीन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिक्स, दोज पॉलिटिकल एक्टिविटी व्हिच एक्चुअली टेक प्लेस इन सोसाइटी। अगेंस्ट इट पॉलिटिकल साइंस मीन ए सोशल साइंस व्हिच स्टडी स्टेट एंड गवर्नमेंट। राजनीतिर अर्थ होची राजनीति प्रकृत आचरण, सही राजनीतिक कार्यकलाप जहाँ प्रकृति रे समय रे हुए एवं यार विरुद्ध रे। राजनीति विज्ञान अर्थ होची एक सामयिक विज्ञान जहाँ राज्य अध्ययन करे। तापरे नेक्स्ट पॉइंट है एटा बहुत इजी पढ़ी देले भी मन रही जीवो। पॉलिटिक्स थर्ड पॉइंट है पॉलिटिक्स इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी where as political science involves an academic exercise involving the study of the state and government। अरे राजनीति होची एक कार्यकलाप जेते बेले राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार को अध्ययन सहित जड़ित। यह academic exercise involving the study of state and government। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड पॉइंट नंबर 4, politics differ from state to state and within each state from time to time। The principles of political science are universal। Politics in India and Britain is different, but the theory of political science is the same in both the country। इटा बहुत माने राजनीति राज्य एवं समय प्रत्येक राज्य मध्य भिन्न differs from the state to state within each state from time to time। The principle of political science universal। Politics in India Britain different, but the theory of political science is the same in the
in both the country. ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଟେ। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୀତି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାନ। ମାନେ ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ଆମ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଅଛି ସବୁ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। 5 number point, whereas each one of us is involved in politics is one way or the other, and directly or indirectly political science is studied only by the student of this social discipline. Politicians are engaged in politics, whereas teachers and students political science study the state and government. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏହି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, the difference between politics and political science is reflected by the fact that a politician can take part in politics without studying political science, and a student of political science may or may not take an active part in politics. Very often, a person having knowledge of political science fails to act successfully in politics. ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ରାଜନେତା ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୀତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୀତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। Science fails to act successful in politics. Very often, a person having knowledge of political science fails to act successful in politics. ମାନେ ଯାହାର ନଲେଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ମାନେ ଯାହାର ନଲେଜ ଥିଲେ ବି ସେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯଦି ତାକୁ ତାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଖାଲି ପଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି।